currency standard. यानी हमारा जो पैसा है fiat money, what is the standard of that currency? For example, in 1935 till 1956, 1935 to 56, this was the time RBI कब establish हुआ? 1935. ठीक है ना? RBI Act was passed in 34 and the RBI started functioning from 35. तो 35 से ही इंडिया का स्टैंडर्ड क्या था? For example, this is the paper currency that India is printing. पेपर करेंसी का you have to have some standard कि किस बेसिस पे you're printing the currency. ठीक है ना? At that time, this 30s and 40s का time, every paper currency, every paper note of the world was published, was printed on the backing of gold. पीछे से you need to have some equivalent amount of gold, then only you can print currency. If you have a gold of 100 crore, then only you will be able to print a currency of 100 crore. ठीक है ना? This is known as gold standard. So India also from 35 to 56 was working on gold standard. Now see, this is the gold standard. Gold standard. Why do you want to print a currency on the gold standard? Why? Because people would not use this paper because paper has no intrinsic value. Why would people use such a money that has no intrinsic value? So to build trust in this money, what they did is they backed up by gold. They told the users, they told the citizens of the country, you can use this money. Why? Because at the back of it, we have an equivalent amount of gold. पर इंडिया के पास we didn't have that much gold. So इंडिया ने gold standard रखा तो सही, पर इंडिया said if we are printing 100 crore, we will only be keeping 40% as gold. So इंडिया का जो gold standard था, it was not 100% backing, it was 40% backing. Indian gold standard backed up the currency by 40%. ठीक है? Now see, 100 crore, if RBI is printing 100 crore, RBI has promised I will be keeping 40% of whatever currency I'm printing in the form of gold. So मैं अपने reserve में I'll keep the 40%. On the basis of that 40%, I'll be printing a lot of currency. Now see, if RBI has to print 200 crores, so RBI has to keep 40% of 200, that is 80 crores. तो 80 करोड़ रुपए डालना पड़ेगा गोल्ड में. ठीक है ना? Now जैसे जैसे you want to increase the currency, you also have to increase the gold. Now this is a limiting factor of the gold standard. Limiting factor क्यों है? Because you cannot print currency unless you have not kept gold. आप तब तक प्रिंट ही नहीं कर सकते जब तक गोल्ड नहीं होगा. ठीक है ना? करेंसी स्टैंडर्ड में जो गोल्ड का स्टैंडर्ड है, it has a limiting factor that you cannot print currency unless you have kept a 40% reserve as gold. अब इंडिया कहां से लाएगा इतना गोल्ड? ठीक है ना? We have to print 200 crore, then 400 crore, then 10,000 crore. Now see, 1956 तक this was how we worked out our currency. From 1935 to 1956, something very mysterious happened in 1944. ठीक है ना? जिसने आज की जो दुनिया है उसका मान के चलिए आप उसका जो स्टांस है या दुनिया जो आज दिखती है आपको, इट इज ओनली बिकॉज ऑफ 1944. अब 1944 में मैं इसको इधर ही ऐसे ही रख रहा हूं, आप मान के चलिए हम मूवी की तरह फ्लैशबैक में जा रहे हैं. ठीक है? 1944, व्हाट हैपेंड? द ब्रेटन वुड्स एग्रीमेंट. You know, there was an agreement in the Bretton Woods जहां पर all of these countries came in. All of these countries came in and US, because it was the leading power of the world, आपका global power था US, super power था US, and at that time US had a huge contribution to the global GDP. तो दुनिया का जो GDP है बहुत बड़ा proportion US से आ रहा था. And US was the economic power at that time. चाइना तो था ही नहीं, ठीक है ना? चाइना तो 49 में आया फिर. आज जो चाइना है, you cannot imagine a world without China. In the same way, you could not have imagined a world without the US. 1940s की बात है. Now US ने पूरी दुनिया को क्या बोला? The entire world. कि देखो भाई, जैसे इंडिया को, इंडिया poor people, hungry people, है ना? ज्यादा पैसा है नहीं आपके पास. What you should do is, why are you doing this? That I will issue this paper currency on the backing of gold
40% का बैकिंग रखूंगा। ये करने की क्या जरूरत है आपको? आप मत करो ये सब। व्हाट यू शुड इंस्टेड डू इज, ये पेपर के पीछे डोंट कीप एनी गोल्ड। ये पेपर के पीछे व्हाट यू डू इज यू कीप डॉलर्स। आप डॉलर रखो। और डॉलर क्यों रखे? व्हाई वुड वी बैक आवर पेपर करेंसी विद अनदर पेपर करेंसी? इसका तो मतलब ही नहीं है कुछ। हमने तो बैकिंग करना था विद सम फिजिकल टैंजिबल रियल वैल्यू। डॉलर एज अ पेपर हैज नो वैल्यू। नाउ यूएस affirmed to the world in 1944 Bretton Woods agreement that all of you central banks, you can shift away from the gold standard and you can peg your currency with my currency because I have pegged my currency with gold. मैंने अपनी करेंसी के पीछे गोल्ड रखा है, आप लोग मेरी करेंसी रखो, मैंने उसके पीछे गोल्ड रखा है। यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट। सो कैन आई से हमारी इनडायरेक्ट लिंकेज हो गया गोल्ड के साथ? यस। नाउ द बिगेस्ट मिस्टेक डन बाय द वर्ल्ड वाज दे ट्रस्टेड द यूएस। तो हमने वी शिफ्टेड अवे फ्रॉम द गोल्ड स्टैंडर्ड। पूरी दुनिया शिफ्टेड अवे फ्रॉम द गोल्ड स्टैंडर्ड। गोल्ड स्टैंडर्ड यानी गोल्ड के बगैर आप करेंसी प्रिंट नहीं कर सकते थे। Now they shifted away. Now some countries are pegging their currency with dollars. Why? Because they promised us कि उसके पीछे हमने क्या रखा है? Gold. Now not only that, they also told us कि as a country जब तुम बहुत सारे डॉलर जमा कर लोगे अपने रिजर्व में, and let's assume tomorrow you feel like I just don't want these dollars, I need my gold. So you can come to us. ये डॉलर लेकर आ जाओ हमारे पास, यूएस के पास। We'll give you the gold. हम इसके बदले गोल्ड दे देंगे आपको। एंड उन्होंने रेट भी फिक्स किया। What was the exchange rate of dollar into gold? They said for every $35 we would give you 1 ounce of gold. ये फिक्स किया उन्होंने ब्रेटन वुड्स में। For every $35 we'll provide you 1 ounce of gold. What is 1 ounce? 28.3 grams of gold. So every $35 is equal to 1 ounce. So आपको कुछ नहीं करना. You have to peg your currency with dollar. We have pegged dollar with gold, and we also have fixed the exchange rate of dollar into gold. And the exchange rate is for every $35 we would give you 1 ounce of gold. समझ आया ना? Now दुनिया they shifted, they trusted. And why would we trust? Why would we trust USA? दुनिया ने क्यों माना इस कंट्री को? फॉर एग्जाम्पल अगर अफगानिस्तान या पाकिस्तान आता कि आप मेरी करेंसी रखो, हम मानते? व्हाई वुड वी ट्रस्ट पाकिस्तान? वो बोलेगा मैंने पीछे गोल्ड रखा है। भाई तुम्हारे पास कौन सा गोल्ड है इतना? इन द सेम वे वी ट्रस्टेड द यूएस बिकॉज एट दैट टाइम यूएस हैड 3/4 ऑफ द टोटल गोल्ड सप्लाई इन द वर्ल्ड। पूरा जो गोल्ड है दुनिया का 75% यूएस के पास था। And US was the only country on the face of the planet to have pegged their currency with gold. ठीक है ना? So we trusted the US because they had 3/4 of the global gold supply. 3/4 of the global gold supply. Now see what happened. India कहाँ पर था? 1935 से 56. Bretton Woods कब आया? 44. India ने immediately did not shift away. 44 में they came up with this agreement. India did not shift away from the gold till 1956. 56 के बाद we shifted. हमने भी फिर गोल्ड छोड़ दिया. Now see what happened. यहाँ पर अब दुनिया ने have shifted their currencies, have pegged their currencies with dollars, and dollar has been pegged with gold. इस बीच there was this economist, a Belgian economist by the name of Robert Trifen. मैं आहिस्ता पढ़ा रहा हूं ताकि आप साथ साथ लिख भी सको. There was this economist Robert Trifen. When this thing happened 1944 में जब ये हुआ 1944 Robert Trifen. Now Robert Trifen was an economist जिसको नजर थी पूरी दुनिया पर. And he said that I'm actually having this dilemma. मुझे डिलेमा हो रहा है कि भाई यूएस ने सारे सेंट्रल बैंक्स को बोला है कि आप क्या रखो? मेरा डॉलर. सो एवरी सेंट्रल बैंक ऑफ द वर्ल्ड इज हैविंग ह्यूज डॉलर रिजर्व्स एंड दीज डॉलर्स आर प्रिंटेड बाय whom? All these dollars are printed by whom?
यूएस फेडरल रिजर्व, यूएस फेड जो यूएस का सेंट्रल बैंक है। नाउ यूएस ने इतना ज्यादा डॉलर छपाया कि वो सारी सेंट्रल बैंक्स के पास है। एवरी सेंट्रल बैंक इन द वर्ल्ड हैज डॉलर्स नाउ, and US has promised that I have pegged this dollar with gold. Now Robert Triffin was of the opinion that I have this dilemma कि this huge amount of dollar, it is so much that US ने उसके पीछे इतना gold नहीं रखा होगा, they don't have that much gold. This is known as the Trifens Dilemma. What was the Trifens Dilemma? Trifens Dilemma is nothing, also known as dollar overhang. Dollar overhang. What is dollar overhang? They have printed dollars in excess. वही हो गया dollar overhang. Now see, जब ये सब टर्म दुनिया भर में पॉपुलर होने लगी, एक कंट्री ने they started taking it seriously. And वहां पर there was this leader Charles de Gaulle. उन्होंने क्या किया in France precisely. So what France did is, France had a lot of dollars in their central bank, in their reserve. तो फ्रांस क्या गया, they went with this dollar to US, और यूएस को कहा कि ये आपका डॉलर वापस हो गया, and give me gold. आप अपना डॉलर वापस दो and give me gold at the exchange rate of $35 per 1 ounce. यही exchange rate था. The moment France went to US and asked for the dollars, US में the president was Richard Nixon. This is the time 1971. Richard Nixon, 1971. Richard Nixon ने in 1971 made a declaration publicly, media पर. अगर आप आज जाओगे, you will find that video today also. He came to the media and made a public declaration for the entire world that US, आप अपना डॉलर जो हमारे पास लेकर आ रहे हो, we would not convert that into gold because we don't have the gold. आप अपने पास रखो, अपने घर पे रखो, ये जितना भी पैसा है, we cannot convert into gold. So he announced that we are suspending dollar gold convertibility. We are suspending the dollar gold convertibility. जब ये suspension हुआ that we cannot convert your currency into gold, आप अपना डॉलर जो आपने मेरे पास लाया है, just keep it with you only, we cannot convert that into gold. Now this statement in 1971 marked the death of Bretton Woods system. Marked the death of Bretton Woods system. तो गोल्ड दुनिया से गायब हो गया. This is what happened. अब 71 में they made this declaration. I call it the biggest bluff of 20th century. ठीक है ना, हमें बोला गया कि आप डॉलर 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 जमा करो, और पूरी दुनिया डॉलर के पीछे चली गई. And when we collected all these dollars and went to US ने अपने हाथ खड़ा कर लिए. They said we don't have any gold. हमने बहुत ज्यादा प्रिंट कर लिया है, अब जो हो गया वो हो गया, अब पैसा रख लो. Now when this was happening, US अपनी बहन के पास चला गया, because पूरी दुनिया में यूएसए को गाली पड़ रही थी. अब यूएस की बहन कौन है? सऊदी अरेबिया. ठीक है, these are sister states. और सऊदी अरेबिया की एक और बहन है इजराइल. ठीक है, इनको हम सिस्टर स्टेट्स कहते हैं. नाउ यूएस वेंट टू सऊदी, और सऊदी को कहा देखो भाई, मेरे पास तो गोल्ड नहीं है, पर मैं तुम्हें ना प्रोटेक्शन दे दूंगा. तुम्हारे 2000 बच्चे हैं, उन सारे 2000 बच्चों को मैं प्रोटेक्शन दे दूंगा. एंड सऊदी फैमिली जो है ना, देयर इज वन फैमिली दैट इज रनिंग द एंटायर शो. सऊदी का जो सऊदी अरेबिया, देयर इज ओनली वन फैमिली दैट्स रनिंग द एंटायर शो. अब पीपल देयर आर नॉट हैप्पी विद दैट डिक्टेटरशिप एंड ऑल दैट, बिकॉज वहां पर लाइक देयर आर स्कॉलर्स, देयर आर पीपल, वाइज पीपल, नॉलेजेबल पीपल. दे वांट अ डेमोक्रेटिक सिस्टम, थोड़ा फ्री सिस्टम, फ्रीडम हो थोड़ा. पर there is this one dictator, आज अभी जो MBS बोलते हैं उसको, the moment anybody has a difference of opinion with the government, वो रातों रात गायब हो जाता है. There are scholars, very legendary scholars, जो 14 सालों से 10 सालों से जेल में पड़े हैं. So there is the one family running the entire show. मैं जब I was there last year and I saw that like you cannot even talk about the government. अगर आप, मेरा cousin है वहाँ मदीना में, तो I was talking to him in his own flat and he just showed me like this, चुप करो. I swear, in his own flat.
तो वहां पर यू कैन नॉट इवन टॉक. तो दिस इज द लेवल. अब व्हाट हैपेंस कि देयर इज दिस वन फैमिली रनिंग द शो. अब इस फैमिली को इतना पावर कहाँ से आया भाई? बिकॉज इनिशियली देवर नथिंग. नाउ देयर पावर वाज एस्टैब्लिश्ड बाय द यूएस. सऊदी अरेबिया के अंदर यूएस की मिलिट्री बेसिस है एंड इट इज द यूएस जो उनके पीछे उसको खड़ा रहकर सपोर्ट कर रहा है. एंड दिस हैज टाइम एंड अगेन टोल्ड बाय द ट्रम्प कि हम अपनी बैंड बजाते हैं सऊदी को प्रोटेक्ट करते करते हैं. ठीक है ना. तो दिस इज इट्स एक्चुअली जो सऊदी की हुकूमत है वो यूएस की वजह से खड़ी है और इजराइल ऑब्वियसली. नाउ यूएस इज बैकिंग अप द सऊदी फैमिली और रिटर्न में दे वांटेड समथिंग. तो यूएस ने क्या कहा सऊदी को, कहा कि देखो आई गिव यू द प्रोटेक्शन, आपको जितना एमिनेशन चाहिए, जितना सपोर्ट चाहिए, प्रोटेक्शन चाहिए, मिसाइल सब दे दूंगा मैं, बट रिटर्न में आई जस्ट वांट वन थिंग. तुम्हारे पास एक चीज है दैट इज ऑयल. आई जस्ट वांट वन थिंग कि व्हेनेवर यू सेल द ऑयल यू ओनली एक्सेप्ट डॉलर्स. रिटर्न में सिर्फ डॉलर लेना. ठीक है. डोंट एक्सेप्ट गोल्ड एंड ऑल दैट. डॉलर लो बस. और मैं तुम्हें सपोर्ट करता रहूंगा. एंड दैट वाज द बर्थ ऑफ पेट्रोडॉलर. दैट वाज द बर्थ ऑफ पेट्रोडॉलर. तो सऊदी ने started, they accepted this phenomena. This means that आपका जो डॉलर था which was initially backed up by gold has now a backing of oil. अब इसकी ऑयल की बैकिंग है. समझ गए आप? That was petrodollar and Saudi Arabia accepted that. This thing started, it became slowly and gradually 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, it became a norm कि तेल बेचना है, रिटर्न में सिर्फ डॉलर लेना है. नाउ सी, ऑयल एंड गोल्ड, दीज आर द ग्लोबल करेंसीज. आप कहीं पर भी जाओ गोल्ड के साथ, पीपल विल एक्सेप्ट. आप कहीं पर जाओ तेल के साथ, पीपल विल एक्सेप्ट. इसकी इंटरनेशनल डिमांड है. मनी, मैंने कहा था आपको, व्हाट इज मनी? मनी इज व्हाट मनी डज. पैसा वो है जो पैसे का काम करता है. और पैसे का सबसे पहला काम क्या होता है? मीडियम ऑफ एक्सचेंज. और मीडियम ऑफ एक्सचेंज कौन बनता है? Which has high demand. So oil and gold has very high demand in the economy, in the global economy. So oil और gold आपका medium बन सकता है. Now oil and gold की इतनी ज्यादा डिमांड है, अब that oil precisely is now convertible with dollar. जिसको भी अब ऑयल बेचना है वो रिटर्न में डॉलर ले रहा है. It became a norm in the entire world because oil was a global currency. Now replacing that oil with dollar became the global currency. डॉलर की जो इस वक्त की हेजेमनी है कि डॉलर इतनी हार्डेस्ट करेंसी क्यों है दुनिया की, डॉलर इतनी ग्लोबली एक्सेप्टेबल करेंसी क्यों है? इट इज बिकॉज ऑफ दीज टू थिंग्स, ब्रेटन वुड्स एग्रीमेंट एंड पेट्रोडॉलर. ठीक है ना. मेजरली बिकॉज ऑफ द पेट्रोडॉलर. सऊदी अरेबिया की वजह से डॉलर की हेजेमनी क्रिएट हो गई पूरी दुनिया में. नाउ some of the countries, after a lot of time, some of the countries, what happened? You might not agree to this because you're young enough. आपको पता नहीं होगा. धीरे धीरे जब आप और पढ़ेंगे you'll try to understand that. You had this guy, a dictator, Saddam Hussein. ठीक है ना. अब Saddam Hussein, US was not happy with him because सुनता नहीं था किसी का. डिक्टेटर ही था तो डिक्टेटर किसकी सुनता है. Now US was not happy with Saddam. What the US tried to do in Iraq में what they tried to do is they tried to supply ammunition and give power to their, वहां पर जो शिया के जो शिया सुन्नी पता है ना, शिया की पॉपुलेशन जो है, there is a divide, political divide था शिया सुन्नी का. तो शियाओं को they started supplying these ammunitions and money and all that funding against the Saddam regime. सदाम को उड़ाने के लिए, सदाम को हटाने के लिए, रेजिम चेंज ऑपरेशन के लिए. अब सदाम को ये बात पता चल गया. सदाम ने कहा देखो भाई, हम इराक है, हमारे पास भी बहुत ज्यादा तेल है. नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज वी विल सेल दिस ऑयल इन एक्सचेंज ऑफ गोल्ड. हम अब डॉलर नहीं लेंगे. द मोमेंट दे डिसाइडेड इट कि वी आर डिचिंग डॉलर और हम डॉलर की जगह गोल्ड लेंगे, United States invaded Iraq. There was no,
आइडिया लाइक वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, फिर वहां वो न्यूक्लियर बम बना देगा. नथिंग लाइक दैट, बिकॉज दे ओनली टोल्ड कि वहां पर हमें कुछ भी नहीं मिला. व्हाई वुड दे इन्वेड इराक? बिकॉज इराक वाज डिचिंग डॉलर. तो दे मेड अ रेजिम चेंज और वहां पर एक नया सिस्टम खड़ा कर दिया जिन्होंने डॉलर एक्सेप्ट किया. सेम थिंग दे डिड विद गद्दाफी. गद्दाफी पता है ना, अनदर डिक्टेटर. गद्दाफी also was going to ditch dollar in exchange of gold. He was going back to the gold standard. They killed him. गद्दाफी को भी. ठीक है. The moment you try to ditch dollar, you're not safe then anymore. तो दिस इस तरीके से इंटरनेशनल रिलेशन डेवलप होता है. इट्स ऑल बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक्स. समझ आ रहा है? कोई वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, यू गो दिस, आज सर्च करना. देयर इज अ बिग डिफेंस डिपार्टमेंट का बहुत बड़ा ऑफिशियल है, विंसली समथिंग नाम है उसका. ही ओनली सेड इट. वो डिफेंस, यूएस डिफेंस डिपार्टमेंट का बहुत हाई रैंकिंग ऑफिशियल है. आफ्टर हिज रिटायरमेंट ही इज ऑन पब्लिक, प्रिंसटन में, एमआईटी में, उसने हर जगह पर ये बात बोली है. When I was in the defense department, they came up with this 9/11 के बाद, they came up with this list that how are we going to invade 7 countries in 5 years, and there was no direct connection with the 9/11. सद्दाम का कोई connection ही नहीं था 9/11 के साथ. There was no Al Qaeda. In fact, they were helping the groups that were connected to Al Qaeda in Iraq. So 9/11 had nothing to do with Saddam, but they still invaded Iraq. They still invaded Libya. They still invaded Sudan. They still invaded these other 7 countries that had nothing to do with 9/11. ठीक है ना? तो ये मामला सिर्फ डॉलर की वजह से है. डॉलर की हेजेमनी बनी रहे. For that you have this war economy. चलो, this was what was happening in the world. इंडिया 56 तक था. तो 1956 से 1995 इंडिया अनाउंस्ड कि हम भी गोल्ड स्टैंडर्ड से हट रहे. We'll now have a minimum reserve standard. Minimum reserve standard या system, minimum reserve system. Now see, India also thought that if we have to peg our currency with gold, we will not be able to print a lot of currency. Why? Because to print a lot of currency, you'll have to increase the gold. तो इंडिया ने कहा एक काम करते हैं, इसको हटाओ यहाँ से. What we'll do now is we will print as much currency as we want, but we will have to back it by 400 crores. So 400 crore ka we will have this minimum reserve of 400 crore. Against this 400 crore, we'll print whatever as much currency as we want. So 400 crore mein they had 115 crore of gold bullion, and sorry, it was not 400 crore, it was 515 crore. 515 crore, where you had 115 crore of gold bullion, and you had 400 crore of foreign assets, foreign securities, foreign assets. This is the minimum reserve. 515 crore का minimum reserve रखेंगे, and with this minimum reserve we'll print as much currency as we want. इस 515 crore में we have 115 crore of gold bullion and 400 crore of foreign assets. Foreign assets में like US Treasury bond है, Bank of England की security है, वगैरह वगैरह. This is 1955. 1955 में थोड़ा और चेंज किया, कुछ खास नहीं, सेम ही सिस्टम था, but we call it managed paper currency standard. Managed paper currency standard. What was it? ये minimum reserve ही था, nothing special. But now they said whatever currency India would print, we will only be keeping 200 crore as reserve. अभी तक कितना था? 515. Out of that, 115 crore will be in the form of gold bullion, and 85 crore will be kept in the form of foreign currency. Foreign currency. Tell me, does it mean anything कि आपने लाखों करोड़ों की करेंसी छपाई है, and on the back of it you only have a 200 crore reserve? इसका कुछ मतलब है इस backing का? Does it mean anything to have a 115 crore of gold against 22 lakh crore of rupees? क्या ये कुछ इसमें कन्वर्ट होगा रियल वैल्यू में? इस बैकिंग में if somebody wants to give this rupee to RBI और रिटर्न में कहेगा कि हमें रिटर्न में गोल्ड दे दो, उनके पास है इतना गोल्ड? They don't have it. They don't have it. Now what the
what the reserve is then for is it is just a token of confidence. ये कुछ भी मतलब नहीं है रियलिटी में, it doesn't mean anything. It's just a token of confidence कि भाई हमने मिनिमम रिजर्व रखा है, ये नाम का है, टोकन है. It doesn't mean, it has no connection with reality. It does not mean that you can go and convert your money with gold and all that. वो सब सिस्टम खत्म हो गया.